So today what I have for you, today I will cover फैज अहमद फैज। आज हम लोग जिस पोएट को कवर करेंगे वो फैज अहमद फैज है। एंड फैज अहमद फैज, रिमेंबर दैट कि अ वेल नोन उर्दू पोएट बॉर्न इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक प्लेस है सियालकोट, वहां पे। So you find what you find कि फैज अहमद फैज one of the one of the foremost poets in the Indian subcontinent. He is also known as revolutionary poet. Yeah, his thoughts were, you can say, he had revolutionary thought. We can compare this poet with P.B. Shelley's of Romantic era. So, one of the foremost poets in the Indian subcontinent, Faiz Ahmad Faiz, was born in Sialkot in Pakistan. He studied philosophy and English literature. उनका जो subject था philosophy and English literature, but poetry and politics preoccupied him more than anything else. For writing poetry that always antagonizes the ruling elite and challenges colonial and feudal values. It's a very significant point. Again, you see the same thing. He challenged colonial, because the particular era, जिस era में हम लोग बात करते हैं, whether that was the era of the Alice Walker, Derek Walcott, yeah, you can say A.D. Hope or Faiz Ahmad Faiz. It was an era, colonial era. So in colonial era, we find what we found the binary colonizer and colonized, the invader, attacker, outsider. They became the master, and the born people of that nation, of that country, they became what? They became servant. सो फैज अहमद फैज भी एक, आप कह सकते हैं, उसी कैटेगरी के पोएट हैं जो उपनिवेशी निवेशवादी मानसिकता को क्या विचारधारा की आलोचना करते हैं। लाइक सच रिबिलियस राइटर्स एज नुजूजी, कह रहे कि जैसे एक रिबिलियस राइटर्स और थे जो है उस कैटेगरी के वो राइटर्स हैं, तो फैज अहमद फैज का एक पोयम है जिसका नाम क्या है, टू आटम। आटम उनका पोयम है और इस आटम पोयम को हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर टेकिंग आटम, व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, बिफोर टेकिंग आटम वी हैव टू कीप इन माइंड Faiz Ahmad Faiz was born in Sialkot in Pakistan. Number one point, he did his graduation in English and philosophy, and in his poems we find what? We find revolutionary thought. Yeah, he was against the particular system. And here you see what? Here you see that he criticized colonial and feudal values. These are the points. Now the next point which you have to remember, Kenya and Darwish of Palestine. जो नुजूजी पोएट है केन्या एंड दारविश ऑफ पैलेस्टीन के उसी कैटेगरी के पोएट रहे। Faiz had to go to jail repeatedly during both colonial and post-colonial times in Pakistan. He was imprisoned for his revolutionary thought, for his voice, for criticizing system, for criticizing गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, सिस्टम को चैलेंज करना, इसके लिए उनको कहाँ पे जेल जाना पड़ा, कई बार जेल गए थे। इंस्पायर्ड बाय द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैज अहमद फैज किस विचारधारा से प्रभावित थे? मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से। इंस्पायर्ड बाय द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। फैज पोइट्री एग्जिबिट्स अ स्ट्रांग सेंस ऑफ कमिटमेंट टू लोअर क्लास पीपल। फैज ने हमेशा किसकी आवाज उठाई है? लोअर क्लास पीपल की आवाज उठाई है। So you see here what? You see here that he was sent to jail, yeah, he was imprisoned, and he criticized both the colonial system and feudal system. And what happened that even in colonial era and post-colonial era, he criticized the system, the particular norms, rules, the regulation of the government. He stood against government and raised the voices of the लोअर क्लास पीपल, जो एक तरह से दबा कुचला जो तबका था, जो दबा कुचला समाज था, उस समाज की वो आवाज बन करके हमारे सामने आते हैं। और उनका जो आइडियोलॉजी था क्या है? मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। Yet it always maintains a unique beauty nourished by the long, rich tradition of Urdu literature. His love poems are appealing as his political poems. इस ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल पॉलिटिकल पोयम से लिखा, सामंतवादी विचारधारा की आलोचना की, उपनिवेशवादी मानसिकता की आलोचना की, तो नो नॉट एट ऑल। एक्सेप्ट इट यू सी देयर कि ही हैज आल्सो रिटन लव पोएम्स, उन्होंने लव पोएम्स भी लिखा।
और वह उतना ही अपील करता है जितना उनका पॉलिटिकल पोएम्स है। And he is considered primarily responsible for shaping poetic diction in contemporary Urdu पोइट्री। और एक चीज और है कि उर्दू पोइट्री में पोइटिक डिक्शन को एक तरह से अच्छे ढंग से जो है संवारने का क्रेडिट इनको जाता है। द क्रेडिट गोज टू दिस मैन या फैज अहमद फैज फॉरवर्ड पर कि उन्होंने इसको एक अच्छा शेप दिया पोइटिक डिक्शन को इन कंटेम्प्रेरी उर्दू पोइट्री। विच पोयम्स डील विद लव एंड विच वंस विद पॉलिटिक्स। उन्होंने बताया कि कौन सी पोयम है, जब आप पॉलिटिकल पोयम्स लिखते हैं तो कैसे शब्दों का यूज किया जाए, और जब आप लव पोयम्स को डील करते हैं तो उसके लिए कैसे आपकी स्टाइल होना चाहिए। उनको कुछ अवार्ड्स भी मिला उसको लेकर के। फैज वाज द फर्स्ट एशियन पोएट टू बी अवार्डेड द लेनिन पीस प्राइज। एक क्वेश्चन बनेगा अगर फैज अहमद फैज से आता है। फैज वाज द फर्स्ट एशियन पोएट टू बी अवार्डेड द लेनिन पीस प्राइज। लेनिन पीस प्राइज उनको मिला हुआ था। और एक चीज, वो पहले एशियन पोएट, ही वाज द फर्स्ट एशियन पोएट टू बी अवार्डेड द लेनिन पीस प्राइज, द सोवियत यूनियंस इक्विवेलेंट टू द नोबेल प्राइज इन 1963। और यह किसके इक्विवेलेंट है? नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट है। तो जो फैज अहमद फैज है वो एक एशियन पोएट, उनको ही गॉट, he was the first Asian poet to be awarded the Lenin Peace Prize। And remember that कि ये जो पीस प्राइज है यह नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट है। और ये कहाँ पे? सोवियत यूनियन में। ये सोवियत यूनियन का नोबेल प्राइज है, सोवियत यूनियन का नोबेल प्राइज है। He used traditional meters and rhythms to compose poetry that was a blend of romanticism and realism। उनकी पोइट्री में रोमांस भी है और रियलिज्म भी, उन्होंने दोनों को मिक्सअप किया हुआ है। ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल और केवल रोमांटिक जो स्पिरिट है या जो रोमांटिक आप कह सकते हैं कि जो एक सेंस ऑफ लिटरेचर है वही अकेले उन्होंने डेवलप किया। नो, नॉट एट ऑल। He has composed his poem on the ground of reality, raised the voices of the marginalized section of society, just became the staunch supporter of whom subaltern हाशिए पर गए जो लोग थे उनकी आवाज बन करके आते। एंड ऑन द अदर हैंड ही हैज आल्सो रिटन सम लव पोयम, सम ब्यूटीफुल पोयम, गजल है या लव पोयम्स है, इश्क मुश्क जो भी आप कही उन सब पर भी उन्होंने लिखा हुआ। तो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू सी, एंड हियर यू सी द ब्लेंडिंग ऑफ रोमांटिसिज्म एंड रियलिज्म। बिफोर हिज डेथ ही वाज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज। उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था लेकिन ही डिडंट गेट इट, दैट इज अनदर थिंग। उनका जो पॉपुलर पोएम्स है अ प्रिजन इवनिंग, इसको हमें ध्यान में रखना है कि अ प्रिजन इवनिंग इज द पॉपुलर पोएम, ईच स्टार अ रंग इज अनदर इंपॉर्टेंट पोएम। अब उसके बाद हमें जो पोएम कवर करना है वो कौन सी पोएम है? आटम को लेकर के हमें बात करनी है उनकी इस क्लास में। तो फिर से आई वुड लाइक टू रिपीट हियर कि फैज अहमद फैज, he was he was you can say he wrote in Urdu, but he was born in Pakistan, Sialkot, and in his poetry you find that he stood against feudal system, colonial spirit, and just supported the voice of the marginalized section of society. Marxist ideology got the Lenin Peace Prize, and he was the first Asian poet, and this Lenin Peace Prize is equivalent to the Nobel Prize in Soviet Union. These things you have to remember. And in his poetry, you see what romanticism and realism. His important poems are A Prison Evening, Each Star Anand, बीइंग इन अ कंट्री वेयर देयर आर ओनली टू सीजन। करें बीइंग इन अ कंट्री, एक ऐसे वतन में जहां पे हम रहते हैं जहां पे केवल दो सीजन है, वेयर देयर आर ओनली टू सीजन। सिंबॉलिक वे में बात कर रहे हो। वी कैन ओनली रिलाई ऑन इमेजेस ऑफ विंटर, स्प्रिंग और ऑटम ऑन पोस्ट कार्ड्स। ही सेज दैट की द कंट्री इन विच वी लिव, जिस वतन में हम रह रहे हैं वहां पे केवल टू सीजन है, देयर आर ओनली टू सीजन। वी कैन ओनली रिलाई ऑन इमेजेस ऑफ विंटर, हम विंटर के इमेजेस पर रिलाई कर सकते हैं, स्प्रिंग के, ऑटम के और पोस्ट कार्ड्स के। Movies are television show, though these ads as we see, the beauty these seasons bring may be to the point that we envy those people experiences it first hand। तो he says that कि जिस वतन में हम रह रहे हैं
वहां पे हमें दो सीजन या दो चीजें जो है देखने को मिलती है। वी कैन ओनली रिलाई ऑन इमेजेस ऑफ विंटर। विंटर के केवल इमेज पर हम क्या कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं स्प्रिंग के। और फिर उसके बाद आप क्या है, आटम है या पोस्ट कार्ड, आटम और पोस्ट कार्ड्स, मूवीज आर टेलीविजन शोज, दो दीज एड्स। और थ्रू दीज एड्स कह रहे बहुत सारा एड्स वगैरह जो मूवीज में आता है, वी सी द ब्यूटी, उसमें दिखाया जाता है ब्यूटी ऑफ दीज सीजन। ये बात सही है कि समटाइम्स यू सी व्हाट, समटाइम्स यू सी की मार्केटिंग सीजन के अकॉर्डिंग जो है मार्केटिंग होता है। अगर टीवी में आप देखेंगे, अगर इंडिया में जैसे अगर अभी इंडिया में कोल्ड या विंटर सीजन आ रहा है, तो अब जो जो जिन कपड़ों का टीवी में मार्केटिंग इंडिया में आएगा वो ऊनी कपड़ा होगा। लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी तो यू सी मार्केटिंग ऑफ द माउंटेन ड्यू, कोका कोला और ऑल दिस सॉफ्ट ड्रिंक का पूरा मार्केटिंग होता है। तो उन्होंने कहा कि ये एक मार्केटिंग का भी एक हिस्सा होता है हमारे यहाँ सीजन जो है, विच वी सी इन टीवी वगैरह में जो कुछ भी। फिर further it says through these ads we see the beauty these seasons bring, maybe to the point that we envy. Sometimes we also start envy to whom, to those people experiencing it first time. Those people who experiences the beauty of these two seasons first time, we start to envy. हम उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। स्प्रिंग एंड ऑटम द सीजन बिटवीन एंड समर। ठीक है, जो स्प्रिंग और जो ऑटम है, यह एक ऐसा सीजन है जो किसके बीच में आता है, समर और विंटर के। इट मीन दैट कि इंपॉर्टेंट जो सीजन है वो कौन सा सीजन है, समर और विंटर है। और इसी समर और विंटर के बीच में क्या है, स्प्रिंग और ऑटम है। आर सीजन वेन मोस्ट नोटिसेबल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यही वो महीना होता है जिसमें बहुत सारी चीजें क्या होती है, बदलाव की शुरुआत होती है। बदलाव की शुरुआत किस मौसम में होती है, या तो ऑटम में होगी या तो स्प्रिंग में होगी। स्प्रिंग में क्या होती है, स्प्रिंग में वी फाइंड द स्प्राउटिंग ऑफ द थिंग्स। वी फाउंड की जो ओल्ड वैल्यूज है, ओल्ड ट्रेडिशंस है, ओल्ड थिंग्स है, दे आर गोइंग टू बी व्हाट, दे आर गोइंग टू बी, दे बिकेम आउटडेटेड इन ऑटम and we find some new things in spring, उनकी जगह पर जो है। as you have seen, well, as you have seen in ode to the west wind, if winter comes can spring be far behind। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो बदलाव आता है वो बदलाव किस मौसम में आता है, दो मौसम में, एक तो स्प्रिंग में और एक ऑटम में। लेकिन ये जो स्प्रिंग और ऑटम है ये किसके बीच आता है, विंटर और समर के बीच आता है। फिर इस further he says are seasons when most noticeable transformation takes place। The most obvious one is the change of temperature। जो एक और चेंजिंग होता है वो क्या, टेम्परेचर का चेंजिंग होता है। स्विंजिंग फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्डनेस टू एक्सट्रीम हीट और वाइस वर्सा। समटाइम्स वी सी की ऑटम में जो एक तरह से इतना कोल्डनेस होता है, वो कोल्डनेस किस में तब्दील हो जाता है, एक्सट्रीम हीट या वाइस वर्सा आफ्टर स्प्रिंग। स्प्रिंग के बाद अगर फेब में मार्च में स्प्रिंग होता है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर वी सी की एक एक्सट्रीम हीट होता है। स्प्रिंग इज परसीव्ड एज अ सीजन। स्प्रिंग एक सीजन के रूप में देखा जा सकता है। स्प्रिंग इज परसीव्ड एज अ सीजन ऑफ लाइफ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, remember that spring is perceived as a season of life. In the poem, spring is the symbol of life, the season when flower starts to bloom, birds start to feed. These are what you can just see. If the flowers bloom, if the birds feed, it means that they are giving the signal. Now it's the what is the you can say it's the season of spring. It's the season of spring. So in spring, what do you see? In spring, you find blooming of the flower and tweeting of the bird. On the other hand, and spring is the symbol of what? Spring is the symbol of life. On the other hand, what do you see in autumn? While autumn or fall is seen as a season of decay. Autumn is the symbol of what? Autumn is seen as a season of decay. Why decay? Leaves turns to gold. In autumn, leaves turns to gold. Trees become bare. The same thing you find where the same thing you see in Ode to the West Wind. So there is no need to explain in a detailed way, because in a डे टू डे लाइफ यू फाइंड दीज एक्सपीरियंस। आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग न्यू कि कोई नया चीज है, ये सारा एक्सपीरियंसेस आप अपने डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं या देख रहे हैं। सो यू सी हियर कि द पोएट टेल्स यू व्हाट, द पोएट डिपिक्ट्स
The beauty of spring, the poet tells you the basic characteristics of autumn, ki what happens in autumn. During autumn, leaves turn to gold, trees become bare. However, autumn is never seen as the decaying season in postcards. करे पोस्ट में कभी भी ऑटम को डिकेइंग सीजन नहीं देखा गया. इन फैक्ट ऑटम इज ब्यूटी, ये एक उनका नया थॉट है. इन फैक्ट ऑटम इज ब्यूटी. इन फैक्ट ऑटम इज ब्यूटी, उन्होंने कहा कि ऑटम खुद अपने में खूबसूरती लिया हुआ है फॉर फोटोग्राफर्स के लिए. फोटोग्राफर्स या पोस्ट कार्ड में कभी भी ऑटम को ये नहीं दिखाया गया कि इट्स द सीजन ऑफ डिकेइंग. No, not at all. But autumn is beauty for photographers. The magic of combining the colors gold, red, orange, and yellow creates a dazzling effect to the image of autumn. He here tells the beautiful image of autumn. And how does he capture the beautiful image of autumn? He says that कि जो autumn का महीना होता है उसमें कई तरह के कलर का जो है कॉम्बिनेशन होता है. कौन कौन सा कलर? गोल्ड कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो, ये सब का सब क्या करता है? क्रिएट्स अ dazzling effect to the image of autumn. Autumn is derived from its decay theme and is given life by people through seeing this season as a season of beauty. So the title of the poem is what? The title of the poem is Autumn. And you see here कि Faiz Ahmad Faiz, yeah, this respectable poet admires autumn and he has his own views about autumn. उनका अपना अलग व्यूज है आटम के बारे में. हम आटम को पतझड़ के रूप में हिंदी में कहते हैं. आटम को इस रूप में देखा जाता है कि आटम जो है दुख का प्रतीक है. आटम में चीजों का जो है फॉलिंग होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है. लेकिन उनका कहना है नहीं, आटम अपने में एक खूबसूरती लिए हुए. जिस तरह से पारंपरिक रूप में कवियों ने आटम को प्रेजेंट किया वह उनका देखने का नजरिया है. लेकिन फैज अहमद फैज का नजरिया उनसे अलग है. और वो क्या है? he says that कि autumn has what magic of combine the colors. autumn का एक जादुई कलर है जो कई कलर का मिक्सअप है. गोल्ड है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, और dazzling effect are these things we see. Autumn is derived from its decay theme and is given life by people through seeing the seasons as a season of beauty. उसमें season of beauty है. However, yeah, by people through seeing the season as season of beauty. However, Faiz Ahmad Faiz brings back the reality that autumn is indeed a season, not a beauty. फिर उसके बाद वो आते टर्न अप होते कि लोग उसको कैसे देखते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो हकीकत से रूबरू कराते हैं कि not today, but thousands of years ago, the people had seen autumn how. हजारों साल पहले से autumn को लोगों ने कैसे देखा. वास्तविकता यह है कि indeed a season, यह सीजन है, लेकिन क्या है? नॉट ऑफ ब्यूटी. यह सीजन ब्यूटी का नहीं है, बल्कि इसको किसके रूप में देखा गया है? डीके एंड ग्रीफ के रूप में देखा गया. फैज अहमद फैज सेज दैट दिस सीजन हैज बीन टेकन एज अ सीजन ऑफ डीके एंड एज द सीजन ऑफ ग्रीफ. His choice of words, choosing words with negative connotations, make his piece a very successful narration of what autumn really is. And the credit goes to this poet, how beautifully he has depicted autumn. Number one point. Number 2 point, the choosing of words, especially some negative connotations, it's just tells what? It's just tells his piece a very successful narration of what autumn really is. In the next passage, he tells this is the way that autumn came to the trees. He says that how the autumn came to the trees, how seeing the changes in the color of the leaves, the leaves of the trees turn into they get what they turn into a with pale color, yeah, something yellow, something you can say gold color they get, and that is the symbol of the downfall. So he says that कि अब पेड़ों की जो पत्तियां हैं या जो और भी चीजें हैं उस समय आठम कैसे जो है आठम का असर होता है.
आप इसको कहाँ पर देख सकते हैं? पेड़ों की पत्तियों को देख करके। इज हाउ फैज स्टार्ट द पोएम, दिस लाइन ऑलरेडी गिव्स अवे द टाइम द नरेशन टेक्स प्लेस, द एंड ऑफ ऑटम और द स्टार्ट ऑफ विंटर थ्रू द शिफ्ट ऑफ टेंसेस फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि the coming of autumn is the symbol of what? Is the symbol of that it gives the signal. Now the season is, the weather is going to change. The season is going to, season cycle is going to change. And now it's what? It's the entry of the winter. Autumn just gives the signal. Now the winter is approaching our life. Winter is approaching our life. The end of autumn or the start of winter through the shift of tenses from present to the past is to keep. In fact, the shift in the verb tenses guides the readers on how the different scenes are arranged. जो shift word है वो बहुत important है. Shifting everywhere. As we see shifting of power, as we see shifting of season, as we see the shifting of ideologies का बहुत सारा, everywhere we find the shifting. पोएट ने इसी चीज का यूज किया है, shifting. The shift in the verb tenses guides the reader on how different scenes are arranged. In the next four lines, the narrator speaks of the transformation of the trees, कि कैसे पेड़ों में या उनकी पत्तियों में चेंजेस आता undergo during autumn. Unlike saying the trees lost their leaves, पेड़ जो अपनी पत्तियां खो देते हैं, in place of lines two and third, Faiz uses the word stripped. Yeah, that's good. And naked. Stripped and naked. So saying कि they lost their leaves, he uses the word कि the trees become what? The trees, it's stripped and it's what? It's naked. They get this position. It means that they are without leaves, a bare tree. To increase the magnitude of the reader's emotion, it implies grief and horror. जब वो जो है ये वर्ड यूज करते हैं कि जो पेड़ है वे स्ट्रिप्ड हो जाते हैं और नेकेड हो जाते हैं और विदाउट लीव्स रहते हैं, तो ये किसको इम्प्लाई करता है? इट इम्प्लाइज ग्रीफ एंड हॉरर. यह सिंबल है, प्रतीक है दुख का, कि इंसान का जीवन भी ऐसे होता है. कैसे होता है? चाइल्डहुड, देन व्हाट, देन उसकी लाइफ में क्या आता है? समर आता है, दैट इज यंग एज उसका. फिर वह जो है क्या होता है? ऑटम को एंट्री करता है. फिर ओल्ड एज उसका किस में तब्दील हो जाता है? विंटर में जाके तब्दील होता है. तो ये ग्रीफ का, हॉरर का या जर्नी ऑफ लाइफ को भी शो करता है. Especially the phrase stripped them down to the skin. Stripped them down to the skin. This phrase you have to remember. The use of the word heart in the fourth line further exaggerates the grimness of what autumn brings to the trees. The heart, which is the most vital organ of human being, is used as a metaphor for leaves. He here gives what he here uses the word heart. Heart is very important. And what is heart? Heart is the vital organ. What is the importance of heart in our body? What is the importance of heart in our body? The same is also the importance of what? The same is also the importance of leaves in the body of whom? In the body of trees. So here heart has been used in a metaphorical way to present, yeah, to show the significance of what? To show the significance of leaves in a tree. Man as well as different animals enter the scene with the lines. Anyone could trample them out of shape undisturbed by a single bone of protest. It's the line of the poem. Anyone could trample them out of shape undisturbed by a single bone of protest. These lines show the helplessness of the trees during autumn. यानी कि जो autumn होता है उस समय जो है जो ट्रीज है वे हेल्पलेसनेस कंडीशन में होते हैं. एंड व्हाट यू फाइंड कि ही आल्सो सेज दैट कि एनीवन कुड ट्रैम्पल देम आउट ऑफ शेप. जैसे कोई आदमी किसी को कुचल दे, कोई भी आदमी किसी को कुचल दे और उसके शेप को डिस्टर्ब कर दे, वैसे ही आटम में जो ट्रीज होते हैं उनके शेप डिस्टर्ब हो जाते हैं और वे कैसे नजर आते हैं?
वे हेल्पलेसनेस कंडीशन में नजर आते हैं। द लीव्स ऑफ द ट्रीज कैन नॉट हेल्प बट फॉल ऑन टू द ग्राउंड। जो ट्रीज है उनका जो लीव्स है, दे आर हाउ दे आर हेल्पलेस, दे आर इन हेल्पलेस सिचुएशन और कंडीशन, दे डोंट हैव ऑप्शन, they don't have any choice except leaving their connectivity with the tree. They fall downward, they fall down onto the ground. And in return, human beings or animals do not even notice that they are walking on these by the tree, by the leaves. और उनको कुचलते हुए जो इंसान जाते हैं, जो गिरी हुई पत्तियां हैं, उनको कुचलते हुए जो इंसान जाते हैं, जो जानवर जाते हैं, वे इसका ख्याल नहीं रखते कि कभी यही पत्तियां उन पेड़ों की तनों से लगी हुई थी। देयर वाज अ कनेक्टिविटी, या इट वाज लिंक्ड विद द व्हाट, विद द, यू कैन से कि उनके तने से जो है, उनकी टहनियों से ये पत्तियां लगी हुई थी। नाउ व्हाट हैपेंड दैट दे फेल onto the ground and they are unnoticed by whom, they are unnoticed by the human beings। तो ये इंसानों की कहानी है कि कोई भी जो इंसान है, जब तक वो यंग है, एनर्जेटिक है, बोल्ड है, करेजियस है, देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट इंसान। जैसे ही वह इंसान क्या हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, हेल्पलेसनेस कंडीशन में आ जाता है, द पीपल ट्रैम्पल दैट इंसान एंड देयर इज नो वैल्यू ऑफ दैट इंसान। सो you can just see here what you can just see here, the journey of the life of a man. The trees unfortunately cannot do anything but look at leaves। The trees कुछ भी नहीं कर पाते, वे केवल अपनी पत्तियों को, गिरी हुई पत्तियों को निहारते हैं। इट्स द हार्ट बीइंग स्टेप्ड ऑन बाय डिफरेंट बीइंग्स। और इसका जो दिल है, उसको वो कई कदमों के द्वारा कुचला जाता है। जो ट्रीज का हार्ट है वो क्या है, ट्रीज का हार्ट जो, दैट इज लीव, leaves in metaphorical way में। And that what happened with that leaves, that leaves fell down on the ground during autumn। And what happened when it fell down on the ground, many step of humans and animals just try, what they do, they stepped it, many step of being, what happened, they stepped by different beings। Birds on the other hand are also given human attributes। और इसी पोयम में बर्ड्स को ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया गया, वे भी इंसानों जैसा बिहेव कर, लाइन नंबर 8 to 12 में। Faiz ways to describe birds that herald dreams in line 8 helps to increase the dramatic situation in lines 9 to 12। He described the birds as the ones carrying dreams। उन्होंने दिखाया कि जो बर्ड्स हैं, उनका अपना अलग ख्वाब, वे अपने साथ कई ख्वाबों को लेकर के चलती है। बट दे आर एग्जाइल फ्रॉम देयर सॉन्ग। और वे जो है आठम में उनके गीत भी उनसे छीन लिए जाते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बर्ड्स में एक्सपेक्टेशन है, बर्ड्स में होप है। और ऐसा देखने को मिलता है कि आटम में बर्ड्स उस जगह को छोड़ के चली जाती है, बिकॉज वो महीना जो होता है ग्रीफ का है, एगिनी का है, पेन का है, स्टेन का है, ह्यूमिलिएशन का है। एंड यू फाइंड कि जो बर्ड्स है, ऐसा लगता है कि देयर सॉन्ग्स हैव बीन स्नैच्ड, उनके गीतों को भी छीन लिया जाता है। इट वाज फर्दर exaggerated in the next line, each voice torn out of its throat। और एक बहुत ही खूबसूरत लाइन, ऐसा लगता है कि हर मधुर आवाज को उसके गले से छीन लिया गया है। चाहे वो जो है कोई एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे आप कह सकते हैं कि बर्ड्स हो, कोई भी बर्ड्स आटम में गीत नहीं गाती है। इट सीम्स दैट the beautiful, the melodious plot of that bird has been snatched by someone। The use of voice, throat and song parallel the plea in the last line of the poem। उन्होंने बताया कि एक बहुत ही ब्यूटीफुली चीजों को रखा गया है, वॉइस को, थ्रोट को, सॉन्ग को अच्छे ढंग से उन्होंने वो किया हुआ। सो यू सी हियर व्हाट की, जस्ट सी हियर द इमेज ऑफ what the image of the leaves, falling leaves, the image, and the tree notices how the tree notices the falling leaves। And falling leaves have been presented as the heart of the tree in metaphorical way। Second important point ki what is done by birds, birds leaves that area, and it seems that their melodious plot, their sweet songs have been snatched by nature। इस समय ऐसा मौसम होता कि कोई कुक्कू गीत नहीं गाती है, each voice torn out of its throat।
In the last stanza, you see Faiz Ahmad Faiz says, after describing how autumn comes to the trees and birds, उन्होंने तीन चीजें बताया, autumn कैसे पेड़ों पर दस्तक देता है, कैसे बर्ड्स अपना अपना नेचर चेंज कर देती है. देन द पोएट सेज द नरेटर प्लीड्स टू गॉड, जो नरेटर है वह गॉड से याचना करता ऑफ मे के महीने में इन लाइन 13 to 18. ही प्लीड्स टू गॉड ऑफ मे, वह जो मई के महीने के गॉड से प्ली करता है, सिंस इट सिंबलाइज लाइफ एंड रिन्यूअल, और वह उम्मीद करता है कि जो है जीवन में एक नया बसंत आएगा. द सेम पैटर्न वी सी वेयर द सेम पैटर्न इन वी सी इन ओ टू द वेस्ट विंड पीबी शैली. फैज अहमद फैज जो है क्या करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं और वो मे को पर्सोनिफाइड करते हैं, और मे उनके लिए क्या है, कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और वो कहते हैं कि जीवन का रिन्यूअल होगा, जीवन में स्प्रिंग आएगा. तो जीवन में रिन्यूअल होना, लाइफ में ताजगी आना, लाइफ में एनर्जी आना, इन सब चीजों को लेकर है. This further supports the claim that the narration happens during winter, the decaying. वो इसका भी सपोर्ट करते हैं, decaying जिसका सिंबल है autumn का, is over. This further supports the claim that the narration happens during winter, the decaying autumn is over, but the trees are now revitalized. ऑटम इज नाउ ओवर, जैसे ही ऑटम खत्म होता है, पूरा ट्रीज जो है रीवाइटलाइज हो जाता है. येट विच हैपेंस ड्यूरिंग स्प्रिंग, और एक कब होता है, स्प्रिंग में. रिवाइटलाइजेशन, रिनोवेशन, स्पेशली रिवाइटलाइजेशन ऑफ द ट्रीज मीन्स कमिंग ऑफ द स्प्रिंग, यू सी हियर. Also, pleading to a God creates a sense of urgency, the need to do something about it quickly. This urgency is already foreshadowed through the severity of the descriptive words found in the first and second stanza. And in this poem, Faiz Ahmed Faiz not only tells about the particular cycle of season, but he also tells that change is the eternal law of nature. And this change happens how? This change happens just you can say कि spring का आना, autumn का आना, and these things, and this change we see in our life, this change happens in nature, in system, and change is the eternal law of nature. So in today's class you came to know about Faiz Ahmad Faiz and his beautiful poem, that is what his beautiful poem Autumn. Now if you have any query or if you have any question you can ask, because for the first time I'm going to interact with you. Now Kuwar Sahab is asking ki when autumn came or autumn, especially in India, you see autumn two times in a year, even in October also, and when we see autumn, especially in India, when you see spring and autumn, you can say same time, spring and autumn in India, in February or in March, and especially in October we see the entry of autumn in India. Someone is writing in April. I think it might be. How do we take that particular season, because in April most of the times you see कि सारा चीज जो है न्यू लीव्स यू सी, जब भी अप्रैल में तो आपको नई लीव्स का दस्तक हो जाता है और ओल्ड लीव्स का जाना हो जाता है. इफ यू सी न्यू लीव्स ऑन ट्री इट मीन्स दैट कि नाउ स्प्रिंग हैज कम और समर का आना हो चुका है. whenever you see the falling of the leaves from the tree it means that कि autumn has taken its entry. जब भी पेड़ों की पत्तियां गिरती है तो वो जो महीना होता है, शिफ्टिंग ऑफ पावर, शिफ्टिंग ऑफ सीजन, दैट मंथ इज द मंथ ऑफ ऑटम. In October and after you can say in Feb or March, जब स्प्रिंग अपने यहाँ स्प्रिंग और ये दोनों चीजें साथ में लगभग चलती है. If you have any query or question, you can say something. Otherwise, I have to conclude here.
Jagriti ji, thank you. Rima Das, thank you. Thanks to all of you for giving your beautiful company and listening me passionately.